हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ Rida and you are watching me on Beautify. आई होप आप सब ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ. वेल, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है ब्लैक गोल्ड एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ मैक का. मेरे पास एक बहुत प्यारा सा शेड था तो आई थॉट कि हम आज उसको यूज़ करें, जो कि बहुत प्रिटी है. वेल, मैंने डिसाइड किया था हम सिंगल शेड करेंगे विद द ब्राउन, लेकिन आप उसमें ब्लैक ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. सो लेट्स बिगिन. मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है विद वैसलीन बिकॉज मेरी स्किन पे वो बहुत सूटेबल है. सो हमने वैसलीन को अप्लाई कर लिया है. नाउ आई एम यूजिंग दिस का प्राइमर. Okay, so now I'm using NC Matte 25. Now I'm using Masayat Misbah's face powder. Now I'm going to start with the eyebrows and आप कोई भी ब्राउन से यूज़ कर सकते हैं for your eyebrows. Again I'm using Huda Beauty Kit because ये मेरे लिए बहुत सूटेबल है. आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. उसमें से हम ब्राउन शेड को पिक कर सकते हैं जो कि हम लाइटर. And then we are going to add light, dark and the darkest brown. Light, dark and the darkest. So now I'm gonna add this MAC eyeshadow. I don't know how it goes. मैंने भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ करना है. Well, it's looking nice. Now mascara. Okay. So आप कोई भी लैशेस यूज़ कर सकते हैं. So we are done with the lashes and eyeliner. अब मैं यूज़ करने वाली हूँ प्रो का कंसीलर for my dark circles and for my dark spots, जो कि शायद कुछ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं. I don't know. Well, I'm using my finger for this. And now I'm using MAC NC25 for my face because this is more suitable for me.
So now I'm using Miss Vast face powder. Well, I'm using beige pencil under my eye. So again, I'm doing the light and the darkest brown for my lower lash line. Okay, so we are done with the lower lash lines. Mascara हमारा हो गया. So again I'm using I'm gonna add my Glam Glow highlighter, जिसको मैं अपने eyebrow के arch में यूज करने वाली हूँ. And this is the most favorite thing. With this, now I'm gonna do my contouring, which is the most important part. Any bronzer जो भी आप comfortable हैं जिसके साथ भी. Okay. आपको अपनी हेयर लाइन से थोड़ा पीछे करना पड़ेगा ताकि वो ब्लेंड करके आपकी हेयर लाइन आपको अपनी हेयर लाइन से थोड़ा सा पीछे करना है, क्योंकि जब आप ब्लेंड करेंगे वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे रख कर करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो. और आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, जस्ट गिव इट अ नेचुरल लुक. Now I'm gonna use my brush from nose. Okay, straight line this way, straight line on this side, and just tuck, make it this, and just blend it. Okay. Now I'm gonna use blush on. I'm using Miss Miswa, although I have lots of blush ons on my kit, but I love to do it because the most favorite brand. So smile and just do it smoothly. Don't go much higher. Make sure blush on means on your blush on your cheeks. Well, now I'm gonna use highlighter. This Glam Glow. I told you कि मैं हमेशा अपनी fingers से पहले उसको nose पे apply करती हूँ. Now I'm using fan brush. Well, I'm using outline. Well, हमने outline कर लिया, but I really love this color, तो I was thinking कि मैं इसी को अपना lip color बना लूँ. Yes. And we are done with this tutorial. Well, I really loved to do it because this is something new for me. मैंने कभी use नहीं किया है first, but it was really good. It was fun doing it. So do try different shades and just let me know what you want from me, and just take care of yourself. अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, and दूसरों को भी खुश रखें. I hope you will love it, and I also loved it. So if you love it, just let me know, and like my channel, subscribe my channel, and share these videos more. Have fun, stay tuned, and stay blessed. Bye.